Hello everyone and welcome to FinSpace. In this video, we're going to perform detailed fundamental analysis of CSB Bank. So please watch the video till the end, and if you haven't subscribed our channel till yet, then do subscribe our channel. So the bank was incorporated in 1920 as the Catholic Syrian Bank Limited. और इस बैंक के जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। बैंक के 90% जो ब्रांचेज है वो इन 4 स्टेट्स के अंदर है और बाकी जो 10% ब्रांचेज है वो बाकी स्टेट्स में है इंडिया के। बैंक की टोटल 411 ब्रांचेज है, 300 ATMs है एंड मोर देन 1.5 मिलियन कस्टमर्स है। सो बैंक 4 बिजनेस एरियाज के अंदर वर्क करती है, विच इज रिटेल बैंकिंग, SME बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। रिटेल बैंकिंग के अंदर बैंक प्रोवाइड्स लोन्स, डिपॉजिट एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू डोमेस्टिक एंड NRI कस्टमर्स एज वेल एज स्मॉल बिजनेसेस। और लोन्स के अंदर बैंक प्रोवाइड कराता है गोल्ड लोन्स, 2 व्हीलर एंड मोटर व्हीकल लोन्स, हाउस लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स, मॉर्टगेज, एग्रीकल्चरल लोन्स एंड माइक्रो फाइनेंस। फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर बैंक ने कुल 5,488 करोड़ का रिटेल लोन प्रोवाइड करा है। फिर आता है SME बैंकिंग। सो SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, and the bank is also in the process of penetrating into MSME sector by establishing a dedicated MSME team for offering better services to the customer in that segment also. बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 2,324 करोड़ का SME लोन दिया है। The third one is corporate banking, under which bank caters to large and mid-sized corporates, and the services that bank provides mainly includes working capital finance, salary accounts, corporate accounts, cash management services and short term funding. बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कुल 4,428 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन दिया है। द लास्ट वन इज ट्रेजरी मैनेजमेंट, और ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर जो ऑपरेशंस आते हैं वो इंक्लूड करते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, सॉवरिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। और बैंक ने कुल 5,461 करोड़ का ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट किया है इन फाइनेंशियल ईयर 20। सो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर CSB बैंक के लिए एक और ख़ास बात हुई है। वो बात यह है कि ईयर 2018 के अंदर CSB बैंक के 51% स्टेक जो है वो FIH मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स ने परचेज करे थे, एंड इन रिगार्ड that transaction bank has received 725 crore in financial year 19 and 487 crore in financial year 20। अब नजर डालते हैं अपन बैंक के ऑपरेशंस पे। सो गोल्ड लोन रिप्रेजेंट 31% ऑफ द टोटल लोन ऑफ CSB बैंक, फॉलोड बाय कॉर्पोरेट लोन्स एट 26.7%, SME लोन एट 19% एंड रिटेल लोन्स एट 9.7%। सो जो 2 व्हीलर बिजनेस का वर्टिकल है वो बैंक ने ईयर 2018 के अंदर इस्टेब्लिश करा था, और उस वर्टिकल ने ईयर 2020 के अंदर अराउंड 265% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गोल्ड लोन्स जो है वो CSB बैंक के लोन्स का मैक्सिमम परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ 31%। सो गोल्ड लोन्स के अंदर भी फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर अराउंड 28% की ग्रोथ देखने को मिली। गोल्ड लोन की जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर जो डिफॉल्ट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली बाकी लोन से थोड़े कम होते हैं, एंड सिंस it is a prime driver for CSB bank, so it is a nice thing for an investor. So now let's have a look upon upcoming digital projects of CSB Bank Limited, which includes WhatsApp banking, chatbot and mobile app, tap and pay cards, CSB e-tax filing, loyalty rewards program for customers and fast-track toll collections. So now let's have a look upon board of directors of the bank. So the chairman of CSB Bank is Mr. Madhavan Arumuthan. Mr. Madhavan is a chairman of the bank since August 10, 2020. He is a seasoned banker and having served RBI for over 37 years. The MD and CEO of the bank is Mr. VR Rajendran. He has been on board since November 2016. He has over 40 years of experience in banking and finance sector. He previously served as a chief executive of the Association of Mutual Funds in India. The non-executive directors of the bank includes Mr. Madhavan Menon and Mr. Sumit Maheshwari. And the independent directors of the bank include Mr. Thomas Matthew, Mr. Bhama Krishnamurthy, Mr. Syed Nagur Ali Jinnah and Ms. Sharmila Abhay Karve. So overall the management of the bank is quite experienced and good, which represents the strong position of the bank. So talking about the impact of COVID-19 on the bank's operation, so
following the RBI guidelines, CSB Bank had offered moratorium on repayment of loan installments to its customers, which quite affected the operations of the bank. But as of now, as per the bank's management, the bank's capital and the liquidity position is strong. And talking about the future, that how the pandemic will going to impact the bank in the future, it will totally depend upon the guidelines and the policies issued by the government of India and RBI. Now let's have a look upon company's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 2018 से कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड शो नहीं कर रहा, विच मीन्स इन 2017 कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, बट इन 2018 it has decreased, in 2019 it has decreased further, and in 2020 it has increased by around 2000% in comparison with 29. तो ईयर 2019 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आने का कारण है कि कंपनी का जो AS15 प्रोविजंस है उसके अंदर कंपनी को इंक्रीज़ करना पड़ा था अपना अमाउंट. और अमाउंट इसलिए इंक्रीज़ करना पड़ा क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज के अंदर रिडक्शन आया था, एंड ऑल्सो देयर वाज इंक्रीज एन्युटी कॉस्ट फॉर DA ऑफ पेंशनर्स. सो इस कारण कंपनी का जो स्टाफ एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 100 करोड़ से इंक्रीज़ हो गया था फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर, और उसी कारण जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर इतना डिक्लाइन देखने को मिला. और फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी की इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट इनकम दोनों इनकम्स के अंदर काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट की ग्रोथ देखने को मिली. सो दीज वर सम प्रोमिनेंट रीजन ड्यू टू विच वी कैन सी सच अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन ईयर बेसिस. और अगर अपन हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो इसके अंदर भी सेम केस है, which means in year 2017 it has increased, but in year 2018 it has decreased, and year 2019 it has again decreased with a huge amount. इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ईयर 2019 के अंदर बैंक ने RBI के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने प्रोविजनिंग रेट्स को इंक्रीज़ करा था, एंड ऑल्सो बैंक ने स्टॉक ऑडिट भी कंडक्ट करवाई थी अपने अकाउंट्स के अंदर टू आइडेंटिफाई incipient stress. And also CSB Bank had also decided to de-recognize the appreciation in security research book, and this had caused additional hit of 11 crore. So these were some of the predominant reason due to which we can see such a decline in company's net profit. However, in financial year 20, company has managed to bring its net profit into the positive figures, which means it has earned a net profit of 12.75 crore, which is again a nice point or a positive point from the point of view of an investor. Now let's have a look upon NPAs of the bank. So basically NPA means non-performing asset, which means those clients or those loans from which the bank is not able to recover their amount. So in this we can see that bank's gross as well as net NPAs decreased significantly as compared to financial year 2016, but there is a slight increase as compared to previous year on which bank should work upon. Now let's have a look upon company's balance sheet. In this we can see that company has raised capital in the past 2 years. So as discussed earlier also, that FIH Mauritius Investment have acquired company CSB Bank's 51% stakes, and because of which we can see such a rise in company share capital. There is also increase in the amount of reserve and surplus account. Deposits of the company have also increased, which shows that the bank is increasing its client base as well as the existing customers of the bank is also increasing their deposits in the bank. Now let's have a look upon bank's ratio. So the first ratio is CASA ratio. So CASA ratio basically represents the total deposits in the bank in the current account and saving account of the bank out of the total deposits in the bank. Basically जितना ज़्यादा CASA ratio होगा उतनी कम बैंक की कॉस्ट होगी बैंक की डिपॉजिट्स पर और बैंक की बोरोइंग्स पर. सो इन दिस वी कैन सी दैट द CASA रेशियो हैव इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 20, which is a positive point. The other two ratios are capital adequacy ratio and provision coverage ratio, which shows capital of the bank in respect to its risk and the ability of the bank to pay off its risk and obligations respectively. Since both of these ratios have increased in financial year 20, therefore it is again a positive point. But इफ वी लुक अपॉन कंपनीज रिटर्न रेशियो, उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि कंपनी का जो ROCE है वो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 1.51 पे स्टैंड करता है, विच इज़ अ गुड पोजीशन.
बट कंपनी के जो ROE एंड ROA रेशियो है which stands at 0.7 and 0.06 respectively are not at a good position. So it is a matter of concern for the company as well as from the point of view of an investor also. Now let's have a look upon banks peer comparison. इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि बैंक का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करता है विच इज़ एट 3332 CR. बट बैंक का जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, और बैंक का जो PB है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. सो दीज बोथ रेशियोज आर अ मैटर फॉर कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर. और अगर अपन बैंक का नेट NPA देखें सो ये अपने को बैंक की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रिप्रेजेंट करता है इन कंपैरिजन विद इट्स कॉम्पिटिटर्स. सो इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. बात करें अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बैंक की, सो 49.73% है प्रमोटर्स के पास, 3.24% है FII एंड FPIs के पास, DII represents 25.16% and the rest which is 21.88% represents the others category in the shareholding pattern of the bank. So now let's have a look upon SWOT analysis of the company, and let's begin the segment with the strength of the bank. So FII and FPI have increased their shareholding in the bank, which means that they are expecting a higher return from the bank in the future. Also, the financials of the bank have increased in financial year 20, which is again a positive point from the point of view of an investor. Coming upon the weakness of the bank, so mutual funds have decreased their shareholding in the last quarter, and also there are higher interest payments of the bank as compared to its earnings. Coming upon the opportunities for the bank, so there is huge untapped market for jewel loans in India, as only a small percentage of the jewel holdings have been pledged with banks or NBFCs. ऑल्सो CSB बैंक का जो NPA है वो डिक्रीज़ हो रहा है रिसेंट कुछ रिजल्ट्स में. और जैसा कि अपन सबको पता है कि इन रिसेंट टाइम्स के अंदर डिजिटल पेमेंट को यूज़ करने के लिए और डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एनकरेज करा है पब्लिक को, और पब्लिक भी अब डिजिटल सर्विसेज को यूज़ कर रही है. और हमने जैसा आपको पहले बताया था कि बैंक अब कुछ नए अपने डिजिटल सर्विसेज ऐड ऑन कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर. सो देयरफॉर इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बैंक ऑल्सो दैट इन दिस सिचुएशन एवरीवन इज using more digital services. Coming upon the threats of the company, तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जो बैंक का PE रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है उसके कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री PE से. सो इट इज़ अ बिग थ्रेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर. ऑल्सो दिस पैंडेमिक इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री विद इट्स नेगेटिव इफेक्ट ऑन द asset quality of the bank also. After all these analysis, we can say that bank's financials are not that great. We can see that bank's financial performance has started improving in financial year 20, but still there are some significant threats for the bank which needs to be considered by an investor before investing in the bank. That's all from our side. Thank you for watching the video. If you liked the video, then please press the like button, share it with your friends, colleagues and family, and do share your feedback with us, and also don't forget to subscribe our channel. Thank you.